Assalamu alaikum, dear students. Assalamu alaikum. As you know, this is class 8th. We were discussing the chapter number 14 of your science textbook, that is friction. So, dear students, yesterday we have discussed friction. So, friction is a force that, as we know, that friction is a force that acts to stop the movement of two touching things or objects. Or in simple way, we can say friction is a force which is always opposite to motion. Whenever any object, whenever anything moves, and there is a force which is opposite to its motion. That force is called friction. That is called friction. So, dear students, we have performed some activities yesterday, in which we have performed that one experiment in which we have performed that why there are different types of friction, static friction, limiting friction and dynamic friction. Then we have performed an activity in which we have performed that why dynamic friction is slightly less than the limiting friction. So, dear students, now today we are going to discuss the laws of limiting friction. So, as you know, first we must know what is limiting friction. So, we have discussed yesterday that limiting friction means the maximum static force of friction comes into play when one body just slides upon the another body is called a limiting friction. Now, there are some laws regarding the limiting friction. Number first law जो है ये आप you can also open your textbook at page number 176. Page number 176 you can also open your textbook. There are some laws of limiting friction. So first law जो है, first point जो है वो है limiting friction always oppose the motion of the body and acts in a direction opposite to the direction of the applied force. Simple. जो limiting friction होता है, it is always equal and opposite to the applied force. ये always होता है, ये equal होता है in opposite to applied force. जो applied force है, इसके opposite होता है ये this limiting friction. Now, number first point, always opposite to the direction of the applied force. Number second point इसमें है limiting friction depends upon the nature of the surface. ये भी हमें full form activity में करना है, practically हमें ये करना है. Limiting friction जो है depends upon the nature of the surface. Then number third point जो है वो है limiting friction increase with the weight of the body. जो limiting friction है it will increase the weight of the body. Number fourth point जो है limiting friction is independent of area of the contact between the two surfaces provided the weight of the body and the nature of the surface does not change. These are the four laws, first, second, and three and fourth, which we have to perform, and we have to discuss them in one by one. And for that we have to perform some activities. So first activity जो हमें है वो है ये. Now to prove, पहले हम देखेंगे to prove that limiting friction depends upon the nature of the surface. ये limiting friction जो है it depends upon the nature of the surface. So if the surface is smooth, what would be limiting friction? If the surface is rough, what would be the limiting friction? So for this purpose we have to perform this activity. ये यहाँ पे मैंने भी बनाई है, तो आप देख आपके बुक पे भी है. यहाँ पे मैंने एक टेबल लाया है, मेटेरियलॉजी का यहाँ पे एक टेबल है, तो इस पे मैंने यहाँ वुडन ब्लॉक लाया है. ये ब्लॉक का वुड प्रोवाइडेड विद ए हुक. तो यहाँ से मैंने एक स्प्रिंग हियर आया. यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लाए हैं, एंड इसके यहाँ इस साइड में भी हुक. यहाँ आई एम from this side I am going to apply a force on this block of wood through this spring balance with the help of my hand. यहाँ से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ इसकी तरफ खींचता है ये फोर्स जो मैं इसको यहाँ से पुल कर रही अप्लाइड फोर्स. यहाँ पे इसका एक अपोजिट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो ऊपर आपको कॉलम में ये रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ द टेबल ये यहाँ पे है, ये वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, इसमें मटेरियल सिंपली है ए टेबल, ए वुडन ब्लॉक एंड ए स्प्रिंग बैलेंस. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, हमें क्या करना है. मेथड आप देख सकते हैं. प्लेस द वुडन ब्लॉक ऑन द स्मूथ टेबल टॉप to the hook of the wooden block. Attach the spring balance. Put the spring balance gently towards the right. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये spring balance जो यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. फोर्स जो मेजर कर सकते हैं कितने न्यूटन हमने किए हैं. यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 and 7. तो यहाँ पे है. Now first I am going to apply the force on this wooden block. So initially it does not start. ये पहले start नहीं. A time will come when it start just sliding over the surface of this table top. यहाँ पे टाइम जब ये यहाँ पे तो at that time we can measure the force. Suppose इस वक्त हमने 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है. 3 न्यूटन
फोर्स अप्लाई किया, बट एट दैट टाइम हमें ये देखना है, now put the spring when gently towards the right, go on increasing the pull on the spring till it just starts sliding. So इसमें हमें देखना है, read and record the force shown by spring है ना, this force, ये force जो है, इस पे हमें जो ही ये start slide हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें मेजर करना है, suppose इस वक्त इसका ये आ गया है 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन आ गया, so this force, ये जो force है, this force, the force, this force shown by the spring balance, this force is equal and opposite to the limiting friction between the surface of the wooden block and the tabletop. ये force जो है, ये limit, it is always equal and it is always equal but in opposite direction to the applied force. Okay. Now इसके बाद क्या करें? इसके after this, now we are going to put a sandpaper on the surface of this tabletop. इस पे हम यहाँ sandpaper रखेंगे, sandpaper इसमें है, यहाँ पे sandpaper इस पे रखेंगे, तो इस sandpaper के ऊपर हम ये block of wood और फिर वहीं पर we will do the same activity, ये हम करेंगे, इस पे हम ये wooden block लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको apply force करेंगे. Now we are going to apply the force. Initially it does not start. A time will come when it will start to slide over the surface of this. But at that time we measure here that we are going to apply 6 newtons. इस वक्त हमने इस पे 6 newton force apply किया है. So what is the reason behind this? Reason is that इस वक्त हमने इसके नीचे जो है on the surface of this tabletop we have kept a sandpaper. So surface जो इसकी है वो rough हो गए. So definitely इसकी limiting friction जो है ये भी increase हो गए. Now इसके लिए हम ये repeat कर सकते हैं. इस पे यहाँ अगर ये sandpaper जो हम इसको remove करेंगे तो टेबल पे हम यहाँ पे इस पे हम स्प्रिंग करेंगे, वो talcum powder हम इस पे डालेंगे, तो ये एक्टिविटी हम करेंगे. एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू ओनली अप्लाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो इसकी सरफेस जो स्मूथ हो गई है. इससे हमें ये नाउ इट क्लियरली हम ये भी डे टू डे एक्टिविटी में देखें, जो हम कैरम बोर्ड घर में इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्राइकर वहाँ पे वो जब स्ट्राइकर वहाँ पे वो कौन है, फिर उसमें वो पाउडर डालते हैं, वो पाउडर होता है उसके लिए, तो उससे भी क्या होता है, उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है. सो इट इंडिकेटर्स, इट इज नाउ क्लियर दैट if the surface is smooth, then the limiting friction is less. और if the surface is rough, अगर surface rough होगी तो limiting friction ज़्यादा होगी. That is why we are applying that powder on our carton board to decrease the limiting friction. वहाँ पे उसकी limiting friction जो है वो decrease करते हैं. Okay. Now इससे में ये अब clear भी हो गया है कि if the surface is smooth, limiting friction is less. If the surface is rough, then the limiting friction is it increases, ये ज़्यादा हो जाएगी. Now ये अब आपको क्लियर हो गया है, तो tomorrow inshallah I think it's enough for today. So tomorrow we will perform another activity in which we have to prove that limiting friction increase with the weight of the body. ये भी हमें देखना है, तो उसके बाद हमें ये भी देखना है कि limiting friction is totally independent of area of the contact between the two surfaces, provided the weight of the body and the nature of the surface does not change. We will perform them inshallah tomorrow. It is enough for today. Have a nice day. Thank you. Allah Hafiz.